गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 16 नवंबर 2020 और ये मनाली का फर्स्ट स्नोफॉल पूरे मनाली को कवर किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये नीचे जो दिख रहे हैं एप्पल ऑर्चर्ड है, जो कल दिखाए थे मैंने, पूरा एम्प्टी था, आज पूरा स्नो से भरा हुआ है। माउंटेन से लेके ट्री से लेके घर तक। क्या नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही देखने के लिए हम कल सीसू गए थे और आज यहाँ पे हमको होटल में ही मिला है देखने के लिए। इतना सुंदर नज़ारा है, वाओ ब्यूटीफुल। हाँ ना ओपन। वाह, कहाँ पे स्नो आ गया इधर। ओह, आ रही है। और ये हमारी गाड़ी आरे के खेल रहा है। और यहाँ पे एक कार का कांच फूटा हुआ। इतनी सारी स्नो। स्नो है मनाली में। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी कुछ देखने मिलेगा। बहुत ही मस्त और ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये है कलिस्ता होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं। बहुत ही मस्त होटल है। अभी हम लोग हैं 1947 कैफे में। यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके। बहुत ही मस्त कैफे है ये। देखते हैं फूड भी कैसा है यहाँ पे अभी।
So Ajita has chosen pasta and Arya has chosen pizza. So very nice treat at Cafe 47 with a view like this. It will beat Switzerland's view. गाइस अभी हम लोग सोलांग वैली के रास्ते पे हैं और यहाँ से पूरा पाताल सुपीक दिख सकता है, देखो। गाइस ये है सोलांग वैली, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अभी हम लोग पहुंच गए सोलंग वैली और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं कैसी जगह है। Are you? मुझे स्कीइंग करनी है। इस साल का ये पहला स्नो और सोलंग वैली तो लोगों से भर चुकी है। स्लो 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 स्लो। ओके, ये है हमारा लास्ट दिन मनाली में और अभी ये स्नो पिघलना शुरू हुआ है। हम लोग यहाँ से जाएंगे शिमला एक रात रुकेंगे, फिर चंडीगढ़ एंड देन होम।